और ये दोनों मैम इतने हैट्स ऑफ। जब दूसरा मारा मैंने कहा कि भाई हो गया। अब हमको भेजते हैं कैसेमीरो कैसेमीरो वरान। दिया ना, कैसेमीरो दिया ना, क्या किया टाइम में तो दे वर नॉट इवन लेटिंग द बॉल टच द ग्राउंड, ऊपर ऊपर से वो लोग पास करते थे एंड देन वो गोल हो जाता था। सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो देसी ड्रिबलर्स। और आज हम लोग बात करेंगे रियल मैड्रिड के 2024-2025 सीजन के उस पे कि हाइज एंड लोज क्या क्या कुछ गलती उनसे हुए, कैसे कैसे इश्यूज फेस किए, कौन से प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर पाए। एंड उसी पे हम लोग को बात करने के लिए वी हैव अ गेस्ट सिमरन मैम इज पैशनेट मड्रिस्टा। वो हम लोग से आज शेयर करेंगी मैड्रिड के उन्होंने बहुत क्लोजली फॉलो किया होगा इस सीजन, तो उनसे आज हम लोग जानेंगे एंड बात करेंगे ऑन मैड्रिड। सो वेलकम सिमरन मैम फॉर जॉइनिंग एंड वी आर सो ग्रेटफुल टू हैव यू हियर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर एंड ये सीजन काफी अच्छा नहीं गया है हम लोगों का, तो वी हैव अ लॉट टू डिस्कस कि क्या गलतियां हुई, क्या सही हुआ, क्यों हम लोग इवन आफ्टर गेटिंग अ प्लेयर लाइक किलियन एम्बापे we couldn't win anything major. We are not going to win anything major. So yes, a lot of disappointments, but the hope still remains. A season cannot define us. So chalo, whatever questions are there, whatever we have to discuss, let's go forward with it. So ma'am, first of all, how would you like to summarize Real Madrid this season in a sentence? Disappointing. It was a disappointing season considering because we have been going after Kylian Mbappe since 2018 and we have seen heartbreaks. हम लोगों का दिल टूटा है लास्ट सीजन जब वो नहीं आया था, उससे पहले भी we have been going after him and when he finally arrived just like Jude Bellingham last season, क्योंकि जब वो आया था he totally changed our season. He was one of the best players and we won the Champions League. So when a player like Kylian Mbappe comes, you expect something. No, and with Real Madrid, we always expect the Champions League. So getting out of the Champions League is the biggest blow जो हो सकता है हम Real Madrid fans के लिए. But whatever. लेकिन we couldn't do anything. We lost 2 finals against Barcelona, which is the biggest heartbreak any Real Madrid fan can endure. ऐसे भी हारना दिक्कत की बात है, but 2 फाइनल, एक में तो like धोबी पछाड़ हुआ हमारे साथ, दूसरे में we held our ground, but still we couldn't win. So yes, disappointing is the word for us this season. So, first of all, thank you, ma'am, for joining us. And before getting too critical, I want to ask you, what do you think कि इस season Madrid के लिए who was the most like savior of a player कि भाई he is there, so there is some hope we can win or we can take this match out. Who was that one? इस सीजन इफ यू आस्क मी नोबडी इन पर्टिकुलर ऐसा कोई था, जैसे कि previously we used to be like Cristiano Ronaldo is there, we are safe, and then came Karim Benzema jo like he showed ki like okay, Karim Benzema is there, we will be safe. And then last season Jude Bellingham came out of nowhere and he was like oh I am there. Vinny Jr showed up and there were substitute players like Joselu who showed up. But this season if you ask me there was not वन प्लेयर जिसको मैं बोल सकूं कि ओके ये प्लेयर खेल रहा है तो हम लोग मैच जीत सकते हैं. समटाइम्स इट वाज एम्बापे, विनी had their विनी जूनियर का इस बार का मैच बहुत अप्स एंड डाउन्स में गया. लाइक समटाइम्स ही इज परफॉर्मिंग, समटाइम्स इट नॉट. समटाइम्स आई एम लाइक गोइंग बैक टू द 1920 सीजन, आई एम लाइक विनी लाइक व्हाई आर यू गोइंग बैक टू योर ओल्ड फॉर्म. लाइक ड्रिबलिंग एंड ऑल इज फाइन, डांसिंग एंड ऑल इज फाइन, बट वी नीड द फिनिशिंग प्रोडक्ट जो हमें नहीं मिल रहा था. But the players who worked hard, the players who were relentlessly doing all the heavy work, दो players है मेरे पास, that is Jude Bellingham and Federico Valverde. I am giving this season to them. Like they work their best. अगर तुम लोगों ने कोई भी मैचेस देखे होंगे अच्छे से तो जूड बेलिंगम इज द प्लेयर जो लास्ट में बेचारे के पसीने में वो लथपथ है. ही इज एंग्री, ही इज नॉट हैप्पी, ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद द वे वी आर प्लेइंग. एंड फेडेरिको वालवर्डे की तो बात बोलनी नहीं चाहिए. लाइक ही इज आवर फ्यूचर कैप्टन एंड with him there हमें लगता है कि okay there is someone who is working hard. तो यही दोनों प्लेयर थे जिनके ऊपर होप रहता है कि like okay फेडेरिको वालवर्डे अभी he'll score a banger or maybe Jude Bellingham will score a last minute goal and then do his celebration and we'll be like yes we won. तो यही दोनों players थे. And ma'am, if you talk about Carlo Ancelotti,
his future. He is now talking with Brazil that Brazil हो सकता है डील जो rumors आ रहे हैं. And do you think Madrid fans ज़्यादा harsh हो रहे हैं कार्लो एंजेलोटी पे, क्योंकि हमने देखा कार्लो एंजेलो has won with Real Madrid 5 Champions League and बहुत with many injuries he has टीम से बहुत कुछ उन्होंने रिजल्ट्स निकाले. So do you think they have been too harsh on Carlo Ancelotti, Madrid fans? Carlo Ancelotti जब से आया था, like when he entered, तब से हमारे fans have been very critical of him. I have had people who were like कि इसको क्यों बुलाया? Carlo Ancelotti has no tactics. He is good for nothing. And then he went on to win 2 Champions League, which is a huge deal. But it's not about criticizing. But I feel in a team like Real Madrid, जब से मैंने देखना शुरू किया है, like it's been like 15 years. Real Madrid doesn't do well with long-term players, and it's been 4 seasons for Carlo Ancelotti. इससे पहले कोई मैनेजर इतना लंबा टिका नहीं है जब से मैंने देखना शुरू किया है. And Zinedine Zidane is a smart one. He knows कि उसको कब निकल जाना है ताकि his Yeah. reputation is not tainted, ताकि उसको कोई कुछ बोल ना सके. But Carlo Ancelotti stayed. It's not his fault. I am not blaming Carlo at all because he did his best. But sometimes change is needed क्योंकि जब नए players आते हैं, we need a new mindset. कुछ फ्रेशनेस की जरूरत होती है. यू कैन नॉट गो विद द सेम टैक्टिक्स अगेन एंड अगेन. एंड कार्लो एंचेलोटी इज समवन who relies heavily on what his players want. He is not someone ki okay, I'm doing this, these are my tactics and I'm deploying these players and you do just that. He incorporates the thoughts of the players. But abhi is waqt, because we are in a transition phase and we lost someone as big as Tony Cruz, we need a manager जो इस टीम के बारे में ना बाहर से सोचे. Carlo Ancelotti is too invested into the team. He is too personally connected with the players right now, right? तो उसकी वजह से he is not doing what is necessary, as in like deploying the youngsters, trying something absolutely new. Because we saw Barcelona के साथ क्या हुआ. Hansi Flick came, he came in with a fresh view. Because Barcelona की team last season से they were doing great. There were good players coming out of it, but they were not connecting, right? Hansi Flick came, he saw the overview of it, and then he managed कि okay, इस team के साथ हम लोग ये कर सकते हैं. Just like that, Real Madrid has good players. हम ये बोल ही नहीं सकते कि हमारा लाइनअप अच्छा नहीं है, because like if you look at the lineup, we will be like ये टीम कैसे हार रही है. So we need a player manager to come in, look at the overview, not connect with players personally. पहले overview देख के किस हिसाब से हम लोग इस टीम को tactically arrange कर सकते हैं, किस हिसाब से we can play and win games. उस चीज के लिए Carlo Ancelotti needs to go and a new manager needs to come. That is it. Besides, blaming Carlo Ancelotti is stupid, because more than that, I am blaming the president and his management, because he is distracted. He is busy with the European Super League wala thing. He is still like, okay, I will make that happen and the money will flow. So he forgot to sign players, because कितने time से we need someone who is a replacement of Carvajal. अगर कोई मुझे बोलेगा कि कार्वाहल की इंजरी की वजह से ये सीजन खराब गया है, यस खराब गया है, बट कार्वाहल has always been an injury prone player. कब का आ जाना चाहिए था कोई उसका रिप्लेसमेंट. वास्केस के ऊपर कैसे डिपेंड कर सकते हैं हम लोग. सो हाँ, मतलब कि इट्स नॉट ओनली अबाउट कार्लो एंचेलोटी, इट्स अबाउट द होल सिस्टम, द होल मैनेजमेंट. और मैम आपने जैसे बोला कि जैसे बोर्ड मतलब एंचेलोटी की लोग फुल गलती हम लोग उनको बोल नहीं सकते, एज जैसे प्लेयर्स की भी हम लोग जैसे फुल गलती उन लोग को बोल नहीं सकते. कि एक विजन रहता है कि पेरेस के पास और एक बोर्ड के पास भी एक विजन रहता है. एज अ मड्रिस्टा मैंने भी नोटिस किया बहुत टाइम से वी वर डिमांडिंग कि एक डिफेंस लाइन में हम लोग को प्लेयर्स बहुत नेसेसरी प्लेयर्स हम लोग को जरूरत है. बैक टू बैक एसीएल इंजुरीज फॉर एडर मिलिटाओ. उसके बाद सडन जैसे नाचो उधर से चला गया, उसके बाद मेंडी का थोड़ा डिप इन परफॉर्मेंस. उसके बाद मेंडी का एक डिफेंसिव लेफ्ट बैक का कुछ एक रिप्लेसमेंट ना ऑन फ्रान गार्सिया जो कि मोर ऑफ ऑफेंसिव प्लेयर. तो पूरा बैक लाइन हम लोग ने देखा कि बहुत एक क्या शेकी स्टार्ट, मतलब एकदम सीजन की स्टार्टिंग से हम लोग को देखने को मिला कि शेकी स्टार्ट. आई थिंक मेरे को जो लगा कि जैसे दिस सीजन अटैकर्स वर डूइंग गुड, but if our defense was good, I think we could have done something better. So do you think if our defense was good and हमारे पास a better substitute रहते and players available रहते, do you think this season could have been better? I get you. डिफेंस हमारा काफी वीक था, and
thank the heavens कि Asensio जैसा player हमारे academy में था. He came in and he did his best. I mean, इतना छोटा लड़का, he came in into a club like Real Madrid. It's very difficult. The anxiety kicks in. आप जब ऐसे बड़े मैच में you step in, even big players do not survive that. Real Madrid का aura ही ऐसा है, but he came in and survived. Yes, like Mourinho said, attack wins you matches, but defense wins you titles. Title. So डिफेंसिवली हम लोग काफी वीक थे एंड जब स्टार्टिंग में ही वी लॉस्ट कार्वाहाल एंड डेविड आलाबा वाजंट देयर वी लॉस्ट मिलिटाओ Rudiger was the only professional center back left for us, which was like ab kya. And then Asensio came out of nowhere, but still we struggled because after Marcelo हमारे लेफ्ट बैक में ऐसा कोई प्लेयर है ही नहीं जिसको हम लोग बी लाइक कि ओके ही इज द परमानेंट स्टार्टर. कोई परमानेंट स्टार्टर है ही नहीं हमारे फुल बैक दोनों पोजीशन में अगर कार्वाहाल ना हो तो, और मार्सेलो भी चला गया. तो यस आई एक्सपेक्टेड रिक्रूटमेंट स्पेशली इन द विंटर ट्रांसफर विंडो क्योंकि लास्ट 4-5 सीजन से वी हैव नीडेड रिक्रूटमेंट्स विंटर ट्रांसफर में, बट nobody bats an eye. इस समय अगर we could have gotten Laporte, he was ready to come. If he could have come, maybe थोड़ा सा और हम लोग को एक क्या बोलते हैं उसको एक प्रोफेशनल और एक प्लेयर मिल जाता जिसके पास एक्सपीरियंस है टू प्ले इन बिग लीग्स. सो यस, दैट बीइंग सेड I didn't see anything good in our attack as well. मतलब कि हमारा midfield was not the same as last season. Last season we played a diamond midfield with 2 forwards. That worked wonderful for us. That was beautiful. And you know, with Vinny, he needs his space in the left flank. But this season kya hua? We have 3 left wingers playing as attackers. You know, Rodrigo bhi left winger hai, but he tries his best to stay in the right. Mbappe left में खेलता है, Vinny left में खेलता है. तो what happens is that Mbappe naturally shifts to his left. उसकी वजह से विनी को स्पेस कम मिलती है एंड द कंफ्यूजन, वी कैन सी द कंफ्यूजन हैपनिंग अटैकिंग थर्ड में. व्हेनेवर दे आर पासिंग द बॉल इट्स ऑलवेज कंफ्यूजिंग बिकॉज दे मिस पास अ लॉट, व्हिच इज you know devastating because we expect more from players like them. And then coming to the midfield, it's not clicking. बीच में जब सेबायोस खेलना शुरू कर दिया था, he was finally getting the hang of it and हम लोग का midfield थोड़ा सा लग रहा था कि okay they are playing in unison. But then after Ceballos got injured, our playing style dipped. उसके बाद से we lost games back to back. La Liga में we dropped points. Barcelona took over again. And then, you know, you saw how we played against Arsenal. I mean, we lost to Barcelona 5-2 or 5-1. I do not even want to remember that. I do not even want to remember that match. And then last match also we lost because Toni Kroos wala jo pivot, he used to be our pivot right in the midfield. वो चला गया. He used to govern our midfield, जिसकी वजह से हमें पता रहता. And the players used to watch him कि अच्छा वो क्या करने वाला है, उस हिसाब से हमारे प्लेयर्स आगे भागते थे. एंड टोनी क्रूज का आइकॉनिक स्टाइल, ही यूज्ड टू जस्ट पॉइंट कि ओके ही इज गोइंग टू ड्रॉप द बॉल फॉरवर्ड एंड व्हेन ही यूज्ड टू अंडरस्टैंड. तो वो रिदम नहीं था इस सीजन. सो दैट इज व्हाई वी डिडंट इवन सी मच ग्रेट गोल्स. मतलब कि स्टार्टिंग में बीच में एम्बापे स्कोर्ड गुड गोल्स, विनी स्कोर्ड गुड गोल्स. Bellingham भी इस season he couldn't score many goals because उसका position ही वैसा था. He had to drop back. He was running like crazy. हमारे team में it was only Federico Valverde and Jude Bellingham जो सबसे ज्यादा दौड़े हैं. And I don't know what happened to Vinny. He used to track back. इस season he is not track. He is like मैं तो यही खड़ा रहूंगा, तुम लोग को जो करना है करो. तो we have been struggling because if you want to win games, you have to attack as a team. The defenders are also attackers. It's not like कि defenders सिर्फ defend करेंगे, attackers सिर्फ attack करेंगे. The defenders have to attack, the attackers have to defend. We won last season's का Champions League just like that. If you remember, हम लोग कुछ ज्यादा खास the best team नहीं थे. हम लोग defend each and every player was defending with their life. That's how we won. Because we won against Manchester City just like that. तो वो इस season missing है. हमारी टीम एज अ टीम नहीं खेल रही है, which we saw against Arsenal. सब इंडिविजुअली बहुत मेहनत कर रहे हैं बट साथ में क्लिक नहीं कर पा रहे हैं. एंड दैट इज द रीजन दिस सीजन हैज बीन व्हाट इट इज. ओके सो बेसिकली ये जो 2 3 मिनट का अभी कॉन्वर्सेशन हुआ उसमें मेरे 3 से 4 क्वेश्चन चुरा लिए गए शायद.
मतलब मैं Okay. जितने क्वेश्चंस बना के रखा था, आउट ऑफ देम मैम आंसर्ड मतलब ऑल आउट ऑफ नोवेयर, पता नहीं कहाँ से। ओके, आई वाज मेकिंग अप अ क्वेश्चन कि दे हैव टू मेनी लेफ्ट विंगर्स, मतलब विनी खेल रहे हैं, हाँ 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 रॉड्रिगो भी मतलब लेफ्ट राइट फुटेड ही है। सो उसका ही मैम ने आंसर दे दिया। सो हाँ। आई हैव टू आस्क वन थिंग कि वी सॉ दैट पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस ऑफ Thibaut Courtois against Arsenal in the second leg or the first leg. We don't have सेकंड। Joselu up front, so we are just spinning the ball. We don't know what we are doing. We are doing as Ancelotti is saying. This is the exact words said by Thibaut Courtois. Uh, Even after having मतलब अभी देखो Mbappe, the best striker, अभी मतलब best left winger we can say, ठीक है, coming from PSG, one of the मतलब free में मिल गया, but you we know what's his value, and True. having Vinny Junior of course, homegrown talent ही है, Rodrigo, Bellingham, and is that saying मतलब वो कहना थोड़ा मेरे को critical लगा कि Thibaut Courtois saying that. I mean, I feel the same. मैं टीबो कोर्तुआ जैसे प्लेयर को, बिकॉज अगर वो नहीं होता तो आर्सेनल के अगेंस्ट हम 10 गोल कंसीड करते, अगर वो नहीं होता Just saying. तो बार्सिलोना के अगेंस्ट हम लोग 20 गोल कंसीड करते. सो Hmm. व्हेन अ प्लेयर लाइक टीबो कोर्तुआ इज सेइंग दैट, इट इज द ट्रूथ. मैं बता रही हूँ क्यों. क्योंकि वी डू नॉट मेक प्लेयर्स लाइक क्रिस्टियानो रोनाल्डो एनीमोर. हमारे पास जब रोनाल्डो था, वी डिडंट यूज टू फियर. तब हम लोग को जब कॉर्नर्स मिलते थे, तब सर्जियो रेमोस भी था, नॉट टू फॉरगेट. हम लोग को उधर से कॉर्नर मिला, वी वर लाइक अब तो कोई ना कोई तो हेडर मार ही देगा, है ना. क्रॉसेस जा रहे, कोई ना. हेडर हेडर गोल्स हमारे लिए इट यूज टू बी लाइक वेरी कॉमन. इधर से हम्म हेडर गोल्स है, उधर से हेडर गोल्स है. अभी लास्ट इट वाज ओनली चौमिनी, राइट? चौमिनी ने अभी बार्सिलोना के अगेंस्ट एक हम्म हेडर मारा था. इट्स सो रेयर. हमारे पास एरियल पावर है ही नहीं. नोबडी इज देयर. रूडिगर इज नॉट गुड इनफ, चौमिनी इज नॉट गुड इनफ. एनरिक का मैंने देखा है कि ही इज गुड एरियली, बट ही इज नॉट गिवन द चांस. सो दैट्स व्हाट कोर्तुआ मेंट बाय. क्योंकि एज यू कैन सी, हम लोग का बिकॉज हम लोग का मिडफील्ड कनेक्ट नहीं कर रहा है. कार्लो एंचेलोटी इज आस्किंग आवर प्लेयर्स टू डू द क्रॉसेस, और वो क्रॉसेस भी सही नहीं हो रहे, बिकॉज क्रूज यूज टू डू देम लाइक वेरी परफेक्टली, एकदम प्लेयर के सर के पास जाके बॉल दे रहा है, उसको बस मारना है. अभी ना हमारे पास ऐसे प्लेयर्स है हु आर वेरी टैक्टिकल, वेरी साउंड व्हेन इट कम्स टू हेडर्स, और ना हमारे पास ऐसे प्लेयर है जो अच्छे क्रॉसेस दे रहे हैं. तो दैट्स व्हाट ही मेंट. क्योंकि होसेलू सेव्ड अस लास्ट सीजन. हम्म उसने बायर्न के अगेंस्ट व्हेन द क्रॉसेस यस वर देयर, यस नॉट ओनली हेडर्स बट having that sense, having that instinct inside the हम्म inside our inside the attacking third. वो instinct हमारे players के पास मैंने नहीं देखा है. एम्बापे is adjusting, ठीक है. फर्स्ट सीजन में, फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन में he was very out of the zone. दिख रहा था कि यार he is struggling, he is nervous because he has a lot to prove. He's coming in and people are instantly comparing him with Cristiano Ronaldo, and he did the uno dos tres, and people are like, okay, now the season is starting, but that didn't happen. So he was nervous. Second half of the season में he did his best. अगर मुझसे भी पूछा जाए कि who were the top 4 players for Real Madrid this season, I will take Mbappe's name because he did show up in the second half of the season. It was Mbappe, it was Bellingham, it was Federico Valverde. सो वही दिक्कत है कि अभी हमारे पास वैसे प्लेयर्स है नहीं जो इतने साउंड है. क्योंकि पहले क्रिस्टियानो रोनाल्डो यूज्ड टू स्कोर गोल्स आउट ऑफ नोवेयर. ऐसे होता था कि इट वाज a half percent chance and it used to be goal, but abhi we are missing many big chances. तो वो एक mind रहना, वो एक instinct रहना inside the box कि okay, the ball is coming and we are scoring a goal, वो missing है. That's what Courtois meant when he said that. एंड मैम इतने हमने नेगेटिव बात कर ली, कितना बुरा सीजन गया. लेट्स टॉक अबाउट द फ्यूचर. लाइक हु डू यू थिंक कुड रिप्लेस कैन रिप्लेस कार्लो एंजेलोटी इन रियल मैड्रिड? There are talks कि अभी तो आ रहा है कि like interim manager Santiago Solari आ रहा है फिर से. So I am looking forward to that because जब जिदान गया था, he came in and then he wasn't given much of a chance. थोड़े months में उसको निकाल दिया गया था because Real Madrid are really intolerant. बहुत जल्दी we change managers when the things are not changing. तो वो आ रहा है. But I do not think he'll be a permanent manager. We are looking at Xabi Alonso. I mean, he can,
do what we want because he is our player. उसको पता है Real Madrid का basic instincts क्या है, Real Madrid का values क्या है. So maybe he is a right choice. Also there is Jurgen Klopp, but I do not know if he'll come because he is still posting about Liverpool. He's still very much into Liverpool and like अभी Liverpool ने league जीता and like he is also celebrating. तो पता नहीं वो आएगा कि नहीं आएगा. But Jurgen Klopp will be a very great choice. I want to see what he tactically does with our team. And एक दो center backs भी ले आओ. I mean, Dean Hudson maybe अगर आया तो like he's young and he's showing a lot. So maybe वो आ गया तो बल्ले बल्ले. But हमारे management में बोला है कि like we are not buying any more defenders. So वो भी नहीं नहीं पता. Like Real Madrid are very chill about the situation. हाँ मैम, जैसे आपने बोला कि जर्गन क्लॉप वुड बी अ ग्रेट चॉइस। अभी कुछ रिपोर्ट्स भी आ रहे थे थोड़े टाइम पहले कि आई थिंक उनके कुछ क्लोज फ्रेंड्स, आई थिंक क्रोएशियन कुछ क्लोज फ्रेंड्स है उनके उनके साथ ही उनका कुछ बात हुआ था। उन्होंने जब जब लिवरपूल को छोड़ा था तब आई थिंक उन्होंने बोला था ही वुड लाइक टू मैनेज रियल मैड्रिड और एल्स जर्मन नेशनल टीम। सो डू यू थिंक ही वुड बी अ गुड चॉइस फॉर रियल मैड्रिड गिवन इफ ही अग्रीज टू जॉइन रियल मैड्रिड? I mean, why not? He did wonders with Liverpool. He made Liverpool win the Champions League. दो बार हमसे final हारे हैं. But because we are Real Madrid, so we cannot judge him too harshly against us. ठीक है. But like he has put the foundation of what Liverpool is right now, right? So a manager and German managers we can always trust. So like if he comes in, why not give him a chance? Because अभी हम लोग ऐसे एक situation में है जब we can say that okay हमारा transition phase चल रहा है. Okay now Modric भी he is getting old. Cruz is gone. कैसेमीरो तो कब का चला गया है and Mbappe has come in and अभी हम लोग अभी बहाने दे सकते हैं कि like okay it's not a proper team right now, so like we can bring in like, or I think Jurgen will do wonders because he has shown his potential. तो आएगा तो बहुत अच्छी बात है. And then we got Xabi Alonso who did wonders with Leverkusen, and he is a core member of Real Madrid. He was there when we won the La Decima. He is passionate. So he's also a good choice. But if you ask me, I'll go for Jurgen Klopp. अगर choice दिया जाए कि okay इन दोनों में से किसको choose करना है, I would go with Jurgen because Xabi बाद में भी आ सकता है. लेकिन let's see what Jurgen can do. अगर if Jurgen Klopp joins in, in the back of the mind, do you think corner taken quickly with Jurgen Klopp and Trent Alexander-Arnold can happen once again? If it happens against Barcelona, then I'm all in. Then I am all in because we need revenge. 3 बार हार चुके हैं और to be very honest चौथी बार भी हारेंगे हम लोग. I'm like अच्छा नहीं खेल रहे हम लोग, and like sometimes you have to accept the fact कि okay our team is not playing well. Barcelona are the better team at this moment. ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे because हम आ रहे हैं वापस. लेकिन हाँ बट उसके लिए हम लोग को ऐसा भी तो प्लेयर चाहिए जो जाके गोल भी करे. उधर से अलेक्जेंडर आर्नल्ड ने उधर से क्रॉस दे दिया, बट इधर से गोल करने वाला भी तो कोई होना चाहिए. तो मे बी इफ दोनों का तालमेल बैठ जाए, मे बी जूड बेलिंगम एंड हिम कैन रिक्रिएट दैट बिकॉज दोनों फ्रेंड्स भी है, दोनों सेम नेशनल टीम से भी है. And then Jude can do this celebration, and then we can bring in the memes, corner taken quickly. Yes.